there is some missing component. And what is that component? Unless that is understood, this is what will keep happening. And today, yesterday, and even day before, what all discussions were going on. Actually, unless what Amma, our chairperson, stands for it, you know, unless the compassion is there, spiritual content in life is there, thinking about someone other than myself is there, we cannot really achieve SDG 16. Today's session which I was attending, in that also this was there, that as long as we are driven by greed and selfishness, SDG 16 is not possible. But more and more there is compassion in our life, there is restraint in our life. Unless the paradigm shift comes, we cannot achieve really what as human society we want to achieve. So this is one realization, and Amma as chairperson has given us that realization. I hope further, when we carry forward the process of C20, these thoughts will be taken ahead, and this will be all CSOs the world over will be striving to inculcate these values, and thus we need a paradigm shift. So that was the realization of all these 3 days deliberations. I am really very happy that for our concluding program of the summit seminar, we have the highest constitutional head authority of state of Rajasthan, Honorable Governor, Mananiya Shri Kalraj Mishra ji. He has been cabinet minister in the government of Uttar Pradesh, in government of India, and he has a very illustrious political career. So we are extremely happy that he is with us today. We are also happy to invite Mananiya Vasundhara ji Raje, who is Vice President of Bharatiya Janata Party and who has been for 2 terms the former Chief Minister of Rajasthan. So she is also with us today. So we are extremely happy to invite her. For our CSOs, the interesting thing to share about her is that she is the recipient of Women Together Award from UNO for services rendered towards self-empowerment of women, and in 2018, she had also received the Best Chief Minister of the Year award at the 52nd Scotch Summit. So we are very happy that she is with us. We also welcome Muhammad Haj Al-Khuri. You know, he is Director General of Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation, UAE. As you all know that we have a special relationship with UAE, and thus from UAE he is present here in the summit seminar, and I had also heard about his work when we had the summit seminar of Seva Group at Bhopal. So we warmly welcome him for this concluding program. We are 3M next. No, 3M has to be next. 3M. Okay. We are also happy to welcome Shri M in our summit concluding program. You know, the inspiration inspiration from him, what it drives the people to save the rivers. Today I was attending the session, but he is so humble. While speaking, he said something, because everyone was saying our inspiration is Guruji, Shri M. Then he said, no, do you know, inspiration is always 1% and 99% is perspiration. So unless we take inspiration from them and work hard, we cannot achieve in life anything. So we are so happy that he is with us in this.
We are also happy that we have Elizabeth Moreno with us. She is Honorable Minister for Gender Equality, Diversity and Equal Opportunities in the government of Prime Minister Jean Castex from 2020 to 2022 in France. And yesterday also we all heard her, and today she is with us in this concluding seminar. We heartily welcome you to be with us. Today you are looking so much like us. So welcome to you. We are very happy that Athaiji Mota is with us here. I hope I pronounced correctly. And he represents all the CSOs network from Brazil. As you know, that the C20 from India next goes to Brazil. And he will be here to take charge from India and carry forward the process in Brazil. So he is with us today in this concluding seminar. And we are very happy that Nidhiji Goyal, she is also working group coordinator and steering committee member. She has welcomed him. Yes. Then we also welcome our Sherpa, the chief coordinator for this whole year, Shri Vijay Nambiarji. Today in one of the session, while talking, he said that when I was asked to become Sherpa by Amma, because Amma told, I said yes, but I didn't know what I was entering in. And really it was very busy, very stormy and very, very difficult period. But he has really given his best, we can say. And he also said it was inspirational for me. And we are very happy to have him with us. Then of course Swami Amrita Swarupanandaji, who is part of Troika. A person with few words can balance the whole process. How it is possible? Swamiji is example of that. So it is really good to learn from him how to do that. We also welcome all the steering committee, international advisory committee members who have guided us all through this period. And we also welcome those who are not present here physically, from our SC members, from our secretariat, and also from certain working group coordinators. But emotionally, mentally, they are present here, like Alexandra Nilo or Swadesh Singh ji, then Dr. Vinay Sahasrabuddhe, Jayant Kulkarni ji from Rambho Margi Prabodhini, our secretariat. So I welcome all of them here for this program, the concluding program of our summit seminar. All the working group coordinators, even these 3 days, they felt time is still less. We have so much to say. And 1 hour for breakout sessions was too less. But they have done exceedingly well in communicating the work that was done all these months. You know, after our summit seminar, just in short period, within few days, we shall be also releasing our communique, and shortly you all will get it. So that will really, in a way, conclude our C20 process. But it's only the C20, that is Civil 20 India process, which started in India, will get concluded. But the work that we have been doing will always continue, and that should continue with much more vigor, because all this 1 year we were guided by Amma. And Amma, as a chairperson,
I welcome her in this concluding program. But I also say that when we welcome Amma, just saying we welcome Amma will not do. What she stands for, the compassion, the love, the values, the dharma, all that we should welcome in our heart. Only then what we learned all these 10 months, we will be really able to carry forward effectively. And if human society has to evolve, if the human being has to be with a evolved consciousness, then unless we welcome all these values what Amma stands for in our heart, we become the light and we start working, that evolution will not take place. So let us welcome all this in our heart and proceed. Thank you. Thank you, Nivedita ji. That was truly insightful and inspiring. As we move on, we're honored to have amidst us Vasundhara Raje ji. She's the Vice President of the Bharatiya Janata Party. And like Nivedita ji mentioned a while back, Vasundhara ji has previously held 2 terms as the CM of Rajasthan in 2003. And she became the first ever woman Chief Minister for the state. We are so delighted to have you amidst us today, ma'am. And आपसे मैं request करती हूँ कि आप आएँ और आज की सभा को संबोधित करें. Pujya Amma. I think I can only say it that way because she has such a special place in our hearts. That the emotion that comes first to you is the one that needs to be put forward. So, Pujya Mataji, Pujya Amma. The Honorable Governor of Rajasthan, Adarniya Shri Kalraj Mishra, Adarniya Shri M, Mrs. Elizabeth Moreno, Swamiji, the Executive Director, Mr. Mota, Ambassador Nambiar, Mohammad Haji Al-Khori, Nivedita ji, delegates, guests, members of the media, and ladies and gentlemen, what a pleasure it is to be here with you today. Namaskar, and a very good afternoon to you all. So it's with great honor and humility, especially here in front of Amma, that I stand before you to actually just touch upon some of the pressing issues that are facing our world today. You've been through 3 days here in Jaipur, and I'm sure that every person in Jaipur knows of this very, very important event that is taking place here under the guidance of Adarniya Amma. And they're all pleased to have you here, and you've been welcomed before. But these issues are important issues, and they're not only important across the world, but to us who are concerned with them. Climate change, gender equality, universal peace, and also the imperative of compassion. So Mahatma Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So in this part of our country, which has some very quaint traditions, the poorest of the poor will offer a tired, weary traveler a glass of water. As a gesture, it is kind, it is simple, but it's also part of a timeless tradition, part of our ancient culture that throughout history has spread this message of tolerance, universal brotherhood, and kindness to all around the world. Basically, in the recent times, we've come across a very major event that has impacted us all, and that was the COVID pandemic. It highlighted really how unprepared and helpless
nation states were. But it also brought about the best in us. Governments, civil society, science, all of us came together. And even though there were all these doomsday predictions about COVID itself, not only did we very, very successfully combat the disease, but nearly the whole adult population of this country got inoculated. And the Prime Minister and his Council of Ministers led from the front, and the states cooperated. And I basically feel that it was the spirit of cooperative federalism at its best. We saw the medical fraternity, we saw scientists, we saw civil society and industry all working together to combat this. And today India manufactures a lot of things, especially healthcare equipment, where a few years ago we were actually importing them. So actually, adversity does bring out the best in us when we are able to face it head on. So while on the topic of the pandemic, I would also like to underline something here. We need to bear in mind that this disease that was in some ways a warning by Mother Nature. Margaret Mead, who's a major anthropologist, said in the race for physical comfort, mankind has plundered hugely natural wealth to a level where now nature is striking back. Felling of old growth forests, polluting oceans, encroaching on pastures. This unquenchable thirst for energy is making us actually destroy the planet that basically sustains us. This time, we human beings do not have anyone else to blame but ourselves. Nobody's doing this to us, we're doing it to ourselves. It is therefore important that all cultures and nations across the world engage in trying to reduce the demands on very scarce resources. They engage on how to reuse what we have and what is the best way to recycle it. The alternative, friends, is oblivion, a future that is too terrible to contemplate. And I think, however seriously we put this, it is not serious enough. The challenges that are imposed by climate change demand immediate and urgent action, basically collective responsibility. As civil society representatives, we need to lead the charge in advocating things like sustainable practices, conservation, renewable energy. These are things that are very, very important to all of us, and we need to mobilize our communities to engage with policymakers and to support initiatives that protect the environment for us, not just for us, but for the generations to follow. Our actions of today are going to impact the world of our children. It is going to impact that world which our children are going to inherit tomorrow. Extreme climates actually hurt those who are the most disadvantaged. The invalid, the elderly, children, women. These are sections of population that are really very, very vulnerable. And with this in mind, we need to bring about development processes, bring in important functioning, aesthetics for ecological and financial justice for these weaker segments of society. If policies and principles are gender just, then they will lead to actual growth. This field is one where a much higher degree of engagement between governments and civil society. So when people say governments need to handle these things, governments cannot take this on their own. They have to be able to work together with civil society to make this process effective. Whenever there is an incidence of violence against women, it is an affront to the dignity of all women. And let us condemn these instances in the most unambiguous of terms. As we sit and deliberate in this summit, and as you have been through conversations with each other,
as you have gone through a year of discussions in interesting topics that touch the lives of so many of us, you will remember that there is an armed conflict happening around us. And in a war, there are no winners. The common man, women, children, businesses, institutions, all stand to suffer. And that's why our Prime Minister has said again and again, and I quote, "This is not an era of war, but one of dialogue and diplomacy, and we must all do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Even if it takes time, even if it tests patience, dialogue can and does bring about acceptable and lasting resolutions of issues." So every well-meaning person around the world would want the two sides to sit down and talk. There are three cores, basic tenets of the Indian ethos. One is dharma, then there's dan, which is charity, and then there's karma, which they say is a reward for the things that you do on earth in the next life. If we think about it, these fundamentals of human conduct are mirrored in all faiths. It's not something that is just Hindus. Amidst the challenges we face, compassion remains the guiding light. So it is the force that binds us together. It is the force which transcends borders, religious ideologies, and other ideologies. It prompts us to take care of each other. It empathizes, makes us empathize with those who suffer, and it helps us to extend a helping hand to the vulnerable. It helps us to empathize with those people who require our services. In promoting compassion, we create a more humane and equitable world. So as this summit is coming to an end, we need to pledge to go beyond the mere rhetoric. Let our voices be amplified through concrete action that makes a difference. Government, as I said, cannot do this alone. You will need the collaboration of civil society. And we have to recognize this as early as possible. We need to bring in businesses. We need to bring in invitations, individuals. We need to create a transformative change. And we need to leverage the power of unity to drive this progress, particularly on all these critical issues. So our spontaneity and our intent will, in the future, determine our future existence. So remember, the journey towards universal peace, climate justice, gender equality, and compassion has to be challenging. It has to be challenging. But it is a journey which is worth undertaking. And together, that's the beauty of it, we have the power to shape a future that is just, that is sustainable, and that is compassionate. I want to thank you all for your commitment and dedication. Let us inspire and be inspired. Let us work together for the betterment of our world. I am extremely grateful to the organization for giving me this opportunity to be here with you today. But before I end, I would like to bow my head before Amma. May your blessings, Amma, be with us always. May your guiding light shine on all of us. May this compassion and love that you have shown to each one of us who has been in touch with you, may this actually pervade the hearts and minds of all the people around us. And I will end with your quote. It is inspiring, and I need you all to remember it. Amma has said, "May our actions speak louder than words. May they create ripples of love, of compassion and respect in human hearts. May the lamps light up our hearts. May they illumine the world and all the sentient and insentient beings in it." Amma, bless us. We are small people trying to do our best in a complicated environment, but with blessings of beings like you and with your love and compassion, I am sure that we will be able to make small ripples around us that will change the way of thinking and the way of working in this world. So I will only say thank you again. Jai Hind and Jai Bharat.
Thank you, Vasundhara ji. Those were beautiful words, and you've certainly left all of us with a lot to mull over while this seems like a conclusion today, but certainly with the words we just heard, it's not ending here. We all need to be mindful of where are we headed next with everything, that has been done as a part of this beautiful C20 initiative. Moving on, I would now like to invite Mr. Athaide Mota. He's the Executive Director of the Brazilian Association of NGOs and member of ABONG. Welcome, sir. Hi, everyone. Thanks again. This is a wonderful closing for the 3 days. I'm a little bit tired of talking because I've talked today like in 4 panels, so you all have been very nice to me. I'm actually, this is the moment where we're going to do the thing, the passing. Okay, I would like to invite Pedro Boca and Beto Jesus to come to the stage. This is the Brazilian delegation here. Yes. Yes, come. Come. Oh, that's later. I'm sorry. Okay. All right. I messed up. Okay. I messed up. So that's not the moment. So the Brazilian delegation is coming. You have to wait. So let me just then speak about the importance of us being here from Brazil to receive the heritage that Indian civil society is going to pass on to us. We're very honored to receive that, and we hope to be able to keep the good work that you guys have done in the past year. I don't have to speak about the challenges, that is to head the C20 and to try to influence the G20, but I think you guys have done a wonderful work, and we in Brazil will do our best to keep up and to improve upon what you guys have constructed and built through this amazing coalition of CSOs and international organizations that have gathered here for the past 3 days. It's been a wonderful experience. This is my 3rd time in India. I love the country, love the people, love the food. It's been really, really wonderful. And of course, I have learned a lot. We all learn from each other. This is part of what being civil society is. And I do hope that we are, at this moment, creating a global South civil society that will be proactive, that will be democratic, that will be inclusive, and that will fight together for the changes that we need to do to have our countries become the countries we deserve to live in, especially for the poorest, for the excluded, for the traditionally marginalized. It's very important that we move towards a world that is more just, more inclusive, and where everyone has a right to live according to their own beliefs and their own will. Thank you very much. Thank you, Mr. Mota. We're so glad to have you amidst us today. We are actually going to move into a very interesting part of this event. We're about to release the Grassroots survey. Now, for the uninitiated who might be wondering what is the Grassroots survey, just to give you some context, at the C20 inception meeting in Nagpur, Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, aptly stated that the C20 is no longer a boardroom discussion and has become a people's movement. In that spirit, a worldwide grassroots survey was conducted by 427 social workers across 43 countries. On Feb 24th and March, it ended on March 15th, 2023. So that particular survey and everything that came out of it is the Grassroots survey, which is about to be released on this stage today. Okay, I invite Ambassador Vijay Nambiarji.
Nambiarji, if you could please present it to Amma, and Amma will then present it to the governor. I request all the dignitaries on the stage to kindly hold it for us to capture a beautiful picture. Thank you. Thank you. I thank all our guests. Kindly be seated. Moving on, another very special moment here on the stage today. As the saying goes, in every ending there lies a new beginning. 608 days, 16 working groups, 1,152 programs, 482 working group meetings, 670 outreach programs, 345 chopas, 232 online meetings, 240 offline meetings, and listen to this one, this is big, 3,335,874 national participation engagement, 14,500 foreign participation engagement, 5,400 CSOs across 122 countries have helped us reach this momentous occasion, which we are about to witness. The handing over the C20 flag to Brazil, the country that would hold the G20 presidency in 2024. This is the moment that we've all been looking forward to for today. So I would like to invite Ambassador Nambiar and Swamiji, if you could please hand over the flag to our C20 chair, Amma, who will then, you can, I'd like to invite the guests from the Brazilian delegation as well. And Mr. Mota, we would like you to do the honors and receive the flag along with, yes. Now I request everyone in the audience to wave the flags and flash your mobile lights, yes. We're remembering Alessandra Nilo at this moment, who unfortunately couldn't be with us today, but she's been with us throughout this journey and been such an integral part of it. Thank you so much. That indeed was a very beautiful moment, one that will remain with us. Thank you, Mr. Mota. Thank you. Thank you to all our guests on stage. I would now like to request our chief guest, Shri Kalraj Mishra ji. He's the Honorable Governor of Rajasthan. Previously, Shri Kalraj ji has had many positions at state and national level. In 2019, he was appointed Governor of Himachal Pradesh before being appointed for Rajasthan the same year. माननीय श्री कलराज जी, प्लीज़ अगर आप आएँ और हमारी इस सभा को संबोधित करें.
सभी को नमस्कार। C20 समिट के समापन समारोह में उपस्थित C20 अध्यक्ष पूजनीय माँ अमृतानंदमयी माँ अम्मा जी, C20 शेरपा श्री विजय नंबियार जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, C20 के कोर सदस्य श्री एम जी, सुश्री निवेदिता जी, उपाध्यक्ष विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, केप वर्डे की माननीय मंत्री एलिजाबेथ मोरेनो जी, श्री अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला अलखोरी जी, महानिदेशक कलिबा फाउंडेशन, ब्राज़ील दूतावास के प्रतिनिधि श्री अथार्डे मोट्टा जी, स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी जी, सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों एवं छायाकार बंधुओं, यहाँ इस आयोजन में आप सभी जो महानुभाव विराज रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं। भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारधाराओं से गहरे से जुड़ी है और देश को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसीलिए मेरा इस आयोजन में आप सभी से आग्रह है कि आइए हम सभी मिलकर अपने विचार चेतना का उपयोग राष्ट्र के संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए करें। यह जो C20 समिट और G20 के देश भर में आयोजनों की प्रक्रिया है, मैं ये मानता हूँ कि हम सब के लिए स्वर्णिम अवसर है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को इस तरह से वैश्विक समुदाय से जुड़े राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता का अवसर G20 के रूप में मिला है। हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी सौगात है। मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान C20 समिट की मेजबानी कर रहा है। मैं आप सभी का इस गौरवमयी धरा पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हृदय के आत्मीय भावों से स्वागत करता हूँ। राजस्थान पधारो, हमारे देश के आत्मीय संस्कृति से जुड़ा रंगों का सांस्कृतिक प्रदेश है। यह राज्य 7 वार और 9 त्योहारों की संस्कृति अपने में समाये हुए है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि राजस्थान के डिंगल और पिंगल काव्य में जो दोहे लिखे जाते हैं वैसा सौंदर्य काव्य विश्व की किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। उन्होंने कहा कि रविंद्र गीतांजलि लिख सकता है परंतु राजस्थानी काव्य का भोज अपने कविता में नहीं ला सकता। यही राजस्थान की धरती, यहाँ के साहित्य और संस्कृति की यह विशेषता है जो इसे स्वर्ग की संज्ञा देती है। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, आ तो सुरगो नए शरमावे, इंड पर देव रमण नए आवे, धरती धोरारी। माने यह राजस्थान की धरती अपने सौंदर्य से स्वर्ग को भी लज्जित करने वाली है। यहाँ पर देवता रमण करने के लिए आते हैं। धोरों की यह धरती रेत राख के लिए अपने प्यार और स्नेह से सभी को आमंत्रित करती है। ऐसे ही राजस्थान और विश्व भर में सर्वाधिक सुनियोजित रूप में बसाए गए पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे C20 का जो लोगो है वो बहुत ही सुखद लगा है, बहुत अच्छा लगा है। यह है यू आर द लाइट, यानी आप सभी प्रकाश हैं।
इसका अर्थ ही ये है कि अंधकार जीवन पर हावी नहीं हो। हम प्रकाश हैं और इसी के लिए हमारे जीवन की यह संपूर्ण यात्रा है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति ही प्रकाश के पूजन से जुड़ी है। प्रातःकाल में सूर्य को अर्घ्य देकर ही जीवन प्रारंभ होता है, तो सायंकाल में भी दीपक प्रज्वलन के साथ उसे नमन करते कहा जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम दुख संपदा आत्मवृद्धि प्रकाशाय दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। यह जो प्रार्थना है, यह प्रकाश के प्रति प्रणम्य भाव ही तो है। हम कामना करते हैं कि प्रकाश अस्त नहीं हो, मनुष्य आलोक से सदा जुड़ा रहे। एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सबसे इस अवसर पर साझा करना चाहूंगा। यह तब की बात है जब लॉर्ड बुद्धा मृत्युशैया पर पड़े थे। उनके बिछोह से उनका प्रिय शिष्य आनंद बहुत अधिक दुखी था। जब उसने देखा कि बुद्ध अपनी घड़ी की अंतिम घड़ी की ओर हैं, तो वह रोने लगा। बुद्ध ने उसके रोने का कारण पूछा। आनंद ने कहा, आप जा रहे हैं, अब हमें ज्ञान का प्रकाश कौन देगा? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, कोई किसी को ज्ञान का प्रकाश नहीं दे सकता। यह कहते उन्होंने जैसे ज्ञान का आलोक बिखेरा, अब दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। यही जीवन का सार है। मैं यहाँ आप सभी के साथ इस समिट से सम्मिलित होने आ रहा था और मुझे गायत्री मंत्र ने भी जैसे आलोक दिया। विश्व के किसी भी भाषा में, किसी भी स्थान पर ऐसी प्रार्थना कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा मंत्र, परंतु उसका बहुत बड़ा अर्थ है। मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र नहीं, यह महामंत्र है। विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी से होती है। इसका अर्थ है, हम पृथ्वीलोक, भूलोक और स्वर्गलोक में, वरलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करे। यह मंत्र नहीं, प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए। बुद्धि को जीवन से जोड़ने की बात इस मंत्र में कितनी सहजता से कही गई है। मैं समझता हूं छोटे से मंत्र का जो विराट अर्थ है वह विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, यह तीनों शब्द तीनों लोक को जैसे नाप लेते हैं। भू माने सारी धरती आ गई, भुवः माने अंतरिक्ष आ गया, होराइजन देख लिया, और स्वः कहा यानी स्वर्गलोक इसमें समा गया। आलोक से प्रार्थना है कि उसकी प्रत्येक किरण हमारे रोम रोम में समा जाए, हमारे भीतर के अंधकार को, कीटाणुओं को मारे और हमें रोज नई से नई प्रेरणा प्रदान करे जीवन जीने की। गुरु नानक देव ने कहा है, मिटी धुंध जग चानड़ होए। इसका बहुत गहरा अर्थ है। नानक देव जी कहते हैं कि अज्ञान की जो धुंध है उसे हटाएंगे तभी यह संसार प्रकाशमान होगा। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश करना जरूरी है। इसी से मानवता उन लक्ष्यों तक पहुंच सकती है जिसमें आधुनिक विकास सभी के लिए सार्थक भूमिका निभा सके। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है। जीने की सार्थकता इस बात में है कि हमारा जीवन किसी दूसरे के जीवन को सरल बना सके। आर्थिक असमानता, लैंगिक विषमता को दूर करते सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र यही है।
कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का धर्म है। मुझे लगता है यह जो सिविल 20 का लोगो है वह भी हमसे कह रहा है कि हम लोग के आलोक में नहाते अपने भविष्य के सुनहरे मार्ग का निर्धारण करें। सिविल 20 क्या है? नागरिकों का संबद्धता समूह है। भारत को G20 की जो अध्यक्षता मिली है वह इसी की छत्रछाया में नागरिक समाज संगठन को अपनी चिंताओं, भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को G20 से जुड़े निर्णायकों तक अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा मंच है। यह कितनी अच्छी बात है कि दुनिया भर में 800 से अधिक नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए यह कार्य कर रहा है। मैं इससे जुड़े सभी प्रतिनिधियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे नागरिकों और समाज के मध्य पूल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बात के लिए सिविल 20 की सराहना करता हूं कि इस समूह के जरिए G20 समूह देशों के आर्थिक हितों एवं नागरिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का महती कार्य किया जा रहा है। मैं माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को भी इस समिट में प्रणाम निवेदित करता हूं। उनकी अध्यक्षता में गठित C20 समूह के विभिन्न समूहों द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान बहुत ही महती कार्य किया गया है। G20 का जो शंखनाद हमारे यहाँ हुआ है वह है वसुधैव कुटुंबकम की सोच का प्रसार। मैं समझता हूँ अम्मा ने भारतीय संस्कृति के संस्कारों में रची बसी G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम को सही माने में चरितार्थ किया है, व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, कि हर कोई उनके विचारों की ओर खींचा चला जाता है। मैंने उनके व्यक्तित्व के ओज को गहरे से अनुभव किया है और यह कह सकता हूं कि आज जीवन में देने के भाव के साथ सर्व कल्याण की जिस सोच का उन्होंने प्रसार किया है वह जन जन के लिए अनुकरणीय है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है कि अम्मा ने सिखाया है कि देते चलो आप दे सकते हैं। न केवल धन, आप ज्ञान बांट सकते हैं, आप पीड़ा मिटा सकते हैं, आप पीड़ित दुखित व्यक्ति के पास जा सकते हैं। हम सब चाहे धनी हो अथवा निर्धन दे सकते हैं। इससे बड़ा और कोई संदेश नहीं जो अम्मा समस्त विश्व को दे रही हैं। इसलिए अम्मा को बार बार मैं प्रणाम करता हूं। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अम्मा C20 की अध्यक्षता कर रही है और उनके नेतृत्व में देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही विशिष्ट कार्य हुए हैं। पूरा विश्व एक परिवार के रूप में कार्य करते एक दूसरे के सहयोग के भावों से आगे बढ़े, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इस समय नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग के ढांचे पर देश में काम हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ सतत विकास और सहयोग के ढांचे को 4P के रणनीतिक स्तंभों पर आधारित किया गया है। यह 4 राजनीतिक स्तंभ हैं। पीपल यानी लोग, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, प्लेनेट अर्थात पृथ्वी और पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। यह सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हीं से 6 परिणाम क्षेत्र सामने आते हैं जो स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और अच्छा कार्य, पर्यावरण, जलवायु और लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं समझता हूं सिविल 20 के अंतर्गत इन्हीं आधारों और लक्षित परिणामों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारा देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय मिशनों की एक श्रृंखला के मजबूत इकोसिस्टम के तहत हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहा है। मैं ये मानता हूँ, अमृतकाल की चुनौतियों का सामना करके आज हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता से मुक्त संसार के तहत देश में जो विकास योजनाएं लागू की गई हैं, ये बहुत प्रभावकारी है। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे मिशन आदि ऐसे कार्य हैं जिन्होंने देश में लोगों के जीवन स्तर को उच्चतर करने में महती योगदान दिया है। इन विकास योजनाओं के साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी हम सचेत हैं और बहुत से स्तरों पर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। सीवरेज परियोजना प्रबंधन, शहरी और ग्रामीण स्वच्छता, औद्योगिक प्रदूषण का निवारण, जल उपयोग दक्षता और गुणवत्ता में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और स्वच्छ गंगा निधि आदि के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सिविल 20 समूहों के तहत इन क्षेत्रों में गंभीरता से जागरूकता कार्य किया जा रहा है। पर मैं चाहता हूं, नागरिकों की बेहतरी के लिए और भी बहुत से जो प्राथमिकता के विकास क्षेत्र हैं, उनको चिन्हित करते हुए उन पर गंभीरता से कार्य हो। देश में विकास की आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व भर में जब प्रयास हो रहे हैं, तो यह भी आवश्यक है कि हम अपनी उस भारतीय संस्कृति की ओर झांकें जिसमें पेड़ पौधों को ईश्वर से जोड़ते हुए उनके पूजने की परंपरा रही है। उन परंपराओं पर जाएं जिनमें प्रकृति पूजन से जुड़े पर्व त्योहारों की संस्कृति हमारे यहाँ रही है। प्राचीन प्रकृति संरक्षण परंपराओं को याद रखते हुए भविष्य के विकास के लिए जागरूकता का प्रसार करें। इस दिशा में बृहद सरकार होने चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि भारत जैसे विकासशील देश सतत विकास अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू संसाधनों का सर्वाधिक समुचित उपयोग करते हुए तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े। नागरिक सहभागिता से इस दिशा में अधिकाधिक कार्य हो। सिविल सोसाइटी संगठन इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कैसे आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देश की विकास योजनाओं नीतियों को आम जन के अनुरूप ढाला जाए। कैसे जो बड़ी योजनाएं हैं उन्हें हम सिविल संगठनों के जरिए आम जन तक व्यवहारिक रूप में पहुंचाएं और असमानता को दूर करने की दिशा में हमारे यहाँ कार्य हो। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को नियमित आय प्रदान करने के साथ उनके जीवन स्तर को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूं इस तरह की जो जनमन से जुड़ी योजनाएं हैं, उनका सिविल संगठन निरंतर मूल्यांकन करें और इसे सुनिश्चित करें कि कैसे आम जन के लिए बनी योजनाओं को व्यवहारिक रूप में उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए और अधिक प्रभावी किया जाए। मैंने सिविल 20 के अंतर्गत विभिन्न समूहों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा है, उनके अनुभवों के बारे में जानकारी की है। मुझे यह जानकर सुखद लगा है कि विभिन्न क्षेत्रों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और विषयों की बारीकी में जाकर आप लोगों ने भविष्य के विकास की रणनीति पर कार्य करने की पहल की है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। सिविल संगठन
सिविल संगठन समूह के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और परिस्थिति संतुलन की दिशा में अभी भी बहुत अधिक कार्य किए जाने की गुंजाइश है। मेरा यह सुझाव है कि देश भर में लोक संस्कृति के अंतर्गत बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास है, उसके आलोक में आधुनिक दृष्टि से कार्य हो। राजस्थान में तो सिर साठें रुख तो भी सस्तो जान जैसी परंपरा रही है, यानी सिर के बदले यदि पेड़ बचता है तो वह भी सस्ता है। राजस्थान के अंदर एक कहावत है। वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में जो बलिदान खिजड़ी में हुआ, यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। वृक्ष पूजन की प्रकृति संरक्षण की परंपराएं जो हमारे यहाँ हैं, उनके अतीत में जाने की आवश्यकता है। इसी तरह परिस्थिति संतुलन के अंतर्गत जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखते उनके संरक्षण की लोक परंपराओं से आधुनिक पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, इस पर कार्य हो। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि लोक में जो आलोक है उसे अनुभूत करें, उसको अनुभव करें। हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए कौशल विकास से अधिकाधिक जोड़ा जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत देश के प्रमुख संस्थानों से जो युवा पढ़कर निकलते हैं, उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो। ऐसे कार्यों को उनके जरिए आगे बढ़ाया जाए जिससे विश्व बंधुत्व की भावना के साथ वैश्विक विकास में भारत की अधिकाधिक भागीदारी हो। मुझसे अपेक्षा की गई है कि इस अवसर पर मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने राजस्थान में संवैधानिक आदर्शों को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम उठाए। राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद मेरी प्राथमिकता यही रही है कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में समानता, नागरिक कल्याण और सभी के विकास के लिए कार्य करूं। क्योंकि मैं राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूं, चांसलर हूं। मैंने तय किया कि युवा पीढ़ी संविधान की हमारी संस्कृति से जुड़े, उसे अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के भी सीख मिले। इसी उद्देश्य से राज्य के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की पहल हमने की है। मुझे खुशी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इस दिशा में कार्य हुआ है। राज्य विधानसभा के अपने अभिभाषण से पहली बार विधानसभा में चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के समक्ष मैंने संविधान की प्रेम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज के वाचन का सूत्रपात किया। प्रयास करता हूं कि अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान संस्कृति से जुड़े मूल्यों के लिए लोगों को प्रेरित करूं। राजभवन में हमने देश का पहला संविधान उद्यान भी इसी उद्देश्य से निर्मित किया है कि संविधान निर्माण और लागू होने की ऐतिहासिक यात्रा के साथ उसके निहित आदर्श मूल्यों का सर्वत्र प्रसार हो। आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। बतौर राज्यपाल मैंने स्वयं व्यक्तिशः जनजातीय क्षेत्रों का समय समय पर भ्रमण किया है और वहाँ विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की नीतियाँ, विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें लागू करवाने की पहल की है, जिससे आदिवासियों को जमीनी स्तर पर लाभ पहुँचे। राजभवन में इसी उद्देश्य से जनजाति एकक की स्थापना हमने की है। देश भूगोल नहीं है। इसी तरह हमें जो आज़ादी मिली है वह भी केवल विचार नहीं है। हमें अच्छे विचारों, निर्णयों, योजनाओं की ओर आगे बढ़ना है। प्रयास करें कि जो कुछ हमारा अच्छा है वह विश्व भर के लिए अच्छा बने। दूसरों के लिए त्याग करने की भावना के साथ
वसुधैव कुटुंबकम की सोच को हम आगे बढ़ाएं। यह सारा विश्व हमारा परिवार है। ऋग्वेद का एक सूत्र है, हमारा ऋग्वेद का एक सूक्त है, आनो भद्राः कृतयो यन्त विश्वतः। अर्थात हे प्रभु, हमें सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हों, विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यों को नागरिक आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के आलोक में कैसे आगे बढ़ाते हुए उन्हें सार्थक करें, इसके लिए सभी मिलकर कार्य करें। इसी से सिविल 20 के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में हम पूर्ण कर पाएंगे। सिविल 20 के अंतर्गत माँ अमृतानंदमयी अम्मा की अध्यक्षता में बने समूहों ने बहुत महती कार्य किया है, अभी भी कर रहे हैं। उन सभी को मेरी एक बार फिर से बधाई, एक बार फिर से उनका स्वागत और एक बार फिर से उनका अभिनंदन है। हमने G20 और इसी छत्रछाया में C20 को राष्ट्र उत्सव के रूप में अपनाते हुए इसकी भव्य तैयारियां की है। देश के कोने कोने में इसके तहत बृहद स्तर पर आयोजन हो रहे। अलग अलग विषयों की बनी समितियां महती सुझावों के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मैं समझता हूं यह समिट और इस तरह के आयोजनों की यही बड़ी सफलता है कि इससे भविष्य की, देश की, विश्व की सुनहरी विकास राहों को प्रशस्त किया जा रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद के इस श्लोक से अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, मृत्यु से अमरता की ओर हमारी राह बने। सर्वर शांति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए हम अपने कार्यों से लोक का आलोक बने। राजस्थान की इस गौरवमयी धरती पर आप सभी का, और विशेष रूप से ये जो पिंक सिटी है जयपुर में, जो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा व्यवस्थित तौर पर बसा हुआ है, जहां आकर लोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जयपुर को छोटे काशी के रूप में कहा जाता है। यहाँ देवताओं की भरमार है, मंदिरों का भरमार है। ऐसे जयपुर में आप सब लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने धैर्य से मुझे सुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। माननीय कलराज मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for those encouraging words. I now invite Swami Amrita Swarupanandapuri, the official representative of the C20 chair, Sri Mata Amritanandamayi Devi Amma. Swamiji is Amma's senior most disciple. He is the vice chairman of the Amritanandamayi Mutt and president of Amrita University. He holds a master's in philosophy and is a renowned author and translator, has written many books including Amma's biography. He has also compiled and translated into English more than 10 volumes of conversations between Amma and her devotees. He is a brilliant orator, magnificent singer and composer of devotional songs, and has been traveling around the world with Amma in her service. And with that, it's now time for Swamiji to come in and propose the vote of thanks. प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो। I humbly bow down at Amma's Sri Mata Amritanandamayi Devi's sacred feet. Amma served us as our sole inspiration and guiding light throughout.
the success of C20 India 2023 was only possible because of her divine leadership and flawless guidance. And before I proceed with my word of thanks, I would like to request our team to offer a memento to the Honorable Governor of Rajasthan. And also, we honor Srimati Vasundhara Raje with a small token of our love. Dear brothers and sisters, today we gather here with a profound sense of gratitude and satisfaction as we draw the curtains on the C20 Final Summit. This remarkable event would not have been possible without the collective efforts and unwavering support of numerous individuals and organizations. I stand before you to extend our heartfelt appreciation to all those who have contributed to the resounding success of this summit. First and foremost, we express our deepest gratitude to the esteemed Governor of Rajasthan, whose patronage and encouragement have been instrumental in making this event a reality. Thank you, Honorable Governor, on behalf of the C20 entire team. We are equally indebted to the Honorable Opposition Leader of Rajasthan, Srimati Vasundhara Raje, the dynamic leader who added a unique dimension to this function. Thank you so much. And my profound thanks to Shri M, the founder and guide of Satsang Foundation, and Sri Nambiarji, without who we would not be able to complete this journey. And I also, my gratitude goes to Sheikh Mohammed Aji Akuruni, His Excellency. Thank you so much for traveling all the way from Abu Dhabi to attend in this program. Thank you so much. And I also thank Athaiji Motha, who came to be with us today to participate in this wonderful function. And my heartfelt gratitude also goes to Elizabeth Moreno, ex-minister from France, and of course, my heartfelt gratitude goes to Nivedita ji. Thank you so much. Our profound appreciation goes out to the C20 Secretariat, Ram Malgi Prabodhini, and all my brothers and sisters, especially Sri Vinay Sahasrabuddheji, Sri Swadeshi, Sri Jayant Kulkarni ji, and several others. Their generous support and unwavering belief in the goals of this summit. Your contributions have enabled us to reach wider audiences and amplify the impact of our collective endeavors. A special word of thanks goes to the civil society organizations, the CSOs, for their unwavering commitment to promoting social justice, human rights, and sustainable development. Your unyielding dedication to creating positive change in our society serves as an inspiration to us all. To our international and steering committee members, the Troika, we extend our sincere appreciation for your visionary guidance and meticulous planning that ensured
the summit's smooth execution. Your expertise and diligence have been invaluable in shaping the discussions and outcomes of this gathering. We also extend our heartfelt thanks to the 16 working group coordinators who have worked tirelessly, literally day in and day out, to bring together diverse perspectives and formulate comprehensive policy recommendations. Your collaborative efforts have been instrumental in crafting actionable solutions to address the most pressing global issues. And I would also like to thank the central government, especially Prime Minister Narendra Modi ji, for trusting us. And also the state government who extended unconditional support to us, the local administration, police, media, and hotel clerks, Amir, and the entire staff who were so helpful, so generous to us. And together as a global community, we have taken a step forward in building a more equitable, sustainable, and compassionate world as we leave this summit with new ideas and renewed determination. Let's remember that our work has just begun. Let's continue to collaborate, advocate, and implement positive change in our respective spheres of influence. And I would also like to say that there might have been mistakes, omissions, flaws, protocol breaches. I request, forgive. This can be always corrected. And let us look at the brighter side of things and move forward. And just so that, to make it clear, to bring some clarity, I would also like to say that there is a communique, a summary of the policy pack, which will be released very soon. Once again, I extend my sincere gratitude to everyone. And before I conclude, I would like to say that I don't know if you have observed something very, very special. Almost all our Western participants here, they are wearing Indian dress. They are wearing saris, and it shows their acceptance. They accept. So that's most important. Accept, understand. But most of the Indian men are wearing pants and shirt. Sorry. I was just joking. So once again, I extend my sincere gratitude to everyone who has been a part of the C20 final summit. May our shared efforts lead us towards a brighter future for all. And before I conclude, RMP Malgi Prabodhini would like to offer a gift for Amma, and also His Excellency Sheikh Mohammed Haji Al Khoury would like to give a gift to our most beloved Amma. And we request to play the C20 video before we conclude. Civil 20, India 2023 envisions a conception of civil society 2.0 in a world where individual, family, society, market, and state can understand their respective roles better and supplement each other rather than engaging in conflicts. This year, the C20 symbolizes the flame of hope, self-motivation, and selfless service. Amma is grateful to the Indian government for arranging such a high-quality meeting. All the issues raised here are vitally important. This should go beyond a mere physical meeting and become a true meeting.
a meeting of hearts and minds. This is the only way to awaken ourselves and others. This year, C20 working groups will focus on integrated holistic health, mind, body, and environment. Sustainable and resilient communities, climate, environment, and net zero targets. Education and digital transformation. Gender equality and women's empowerment. Disability. Special Committee on Financial Issues. Technology, security, and transparency. Lifestyle for environment. Preservation and conservation of traditional arts, crafts, and culture. Human rights as human values. Revival of rivers and water management. Seva, sense of service, philanthropy, and volunteerism. Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Diversity, inclusion, and mutual respect. SDG 16 and promoting civic space. Delivering democracy through participatory governance. Thank you, Swamiji. As we conclude the valedictory session of the Civil 20 India 2023, I request you all to stand in honor of the National Anthem of India. Thank you, all the dignitaries who are present on stage. For one last time, I request everyone to come together for a group photograph. And I request the audience members to be seated. Steering Committee, International Advisory Committee, and Working Group Coordinators. What is that? The photo. Oh, so I have to invite after the governor leaves. Steering Committee. Steering Committee. Okay, let me just. I have to invite them on stage, huh? Yes, Steering Committee, International Advisory Committee. International Advisory Committee. Working Group Coordinators. All together? To come on stage after the governor. Yeah. Announce. I also request all the Steering Committee, International Advisory Committee, and Working Group Coordinators to kindly come together for a group photograph.
I repeat, I'm requesting all the steering committee, international advisory committee, and working group coordinators to kindly come up on stage after the governor has left. Just make way for the governor to leave, please. All else to be seated. I request the other guests to remain seated, please. I request everyone to be seated so that there's enough way for the Honorable Governor to leave. Thank you. I request everyone to be seated. We're still hoping to make way for Honorable Governor's exit. Please do not crowd the middle of the hall, please. I request everyone to be seated.